Can go on a mute. Okay. So Anas, firstly, thank you so much for joining us today at War of Speech. And since all of my mentees were really super inspired by you, I am inspired by you, by your journey. Because I still remember I met you online. I think किसी ने post डाला था अपना story पे कि they had posted your reels, I believe. So since then I started. I'll repeat the question again, Anas, for you that. Since we all are inspired by you, I would love to know your journey, that how did you get started as a motivational speaker? Yes. How did you start your journey? Firstly, thank you very much, Sujatha ma'am, and all the members of Pro Speakers Hub for inviting me in this such an amazing event and such an energetic event. Thank you very much for inviting me, and it is my pleasure to be here in front of you all. Thank you very much, firstly. And the day when I started my journey, I can say that I started my journey when I was just 7 years old. But at that time, I don't know that what I am doing, and am I really concentrated to my future? I didn't know at that time when I was just 7 years old, because at that time I was an anchor in my school. Just wait a minute. I started my journey when I was just 7 years old. But that time I don't know that I'm literally doing public speaking. I thought that this is just an event in my school, because that time I was so little. And जब मैं एंकरिंग कर रहा था अपने स्कूल में, तब कई सारे पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हुए थे. कुछ पेरेंट्स के चिल्ड्रन वहां पर डांस कर रहे हैं, कुछ आके परफॉर्मेंस कर रहे हैं. But the energy which I was have at that time, my parents were literally happy, and the parents were just sitting in the right or left in my parents, जो सिर्फ साइड में बैठे हुए थे मेरे पेरेंट्स के. वो खुद मेरे पेरेंट्स को कह रहे थे कि आपको पता है ये किसका बच्चा है. मेरे पेरेंट्स को पूछे थे आपको पता है किसका बच्चा, अगर हो तो जरा मिलवाइएगा. तो मेरे पेरेंट्स का हाँ, ही इज माय चाइल्ड, वो मेरा ही है. सो दैट टाइम माय पेरेंट्स थॉट दैट the public speaking has a career, and I can be the public speaker in the future. And the opportunity came in the lockdown, because at the lockdown I was just wasting my time by playing PUBG on my mobile. As you all know, the game PUBG, and I was addicted to that game, because I don't know all those things, all the social media and all the vocabulary which this social media world have. All the vocabulary I don't know that. In fact, I don't know the word of consistency. I can say that after coming into this industry, I improved my English also. I improved my communication skills also, because in lockdown मैं बहुत ज्यादा shy भी हो गया था. जो मेरी प्रैक्टिस थी, बहुत बरसों की प्रैक्टिस, वो छूट गई थी. एंड दैट्स व्हाई मेरे पेरेंट्स ने एक बार, मतलब खासकर मेरी मम्मी ने मुझे एक बार अपने पास बुलाकर, अपने साथ बिठाकर एक बार उन्होंने मुझे पूछा दैट अनस, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ. एंड हाँ, एक बात है कि मैंने अपने पहले से ही सोच कर रखा था कि मुझे जॉब बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट लाइक टू डू जॉब एट दैट टाइम. सो अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे बिजनेस भी करना है, बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज ओवर दैट टाइम. सो मैं बिल्कुल शांत रहा उस वक्त. मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट क्या है. एंड दैट टाइम माय मॉम रिकॉग्नाइज्ड माय टैलेंट दैट अनस, यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर. Unless you are a good you can motivate people in this little bit age, because you are little, and when you will talk in front of people with confidently, because there are so many people who don't know how to speak in the front of stage, so you can inspire them. So at time of lockdown, I don't have the kind of stage, मतलब मैं लोगों के पास नहीं जा सकता था. लॉकडाउन में मैं किसी स्टेज पर नहीं बोल सकता था. So what was the opportunity? That was social media. I started my journey through YouTube in lockdown 2020, and I uploaded my first video. And the thing which motivated me, that is money. I'm truly, to be honest, मैंने कई सारे लोगों की जर्नी देखी थी जो इन्होंने मतलब सोशल मीडिया से अर्निंग करके उन्होंने अपना सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड की थी. बट उनकी सालों की मेहनत थी, मुझे लग रहा था तुरंत हो जाएगा. So that was my myth. But I started my public speaking journey from YouTube, and then so on I started. And I also started my Instagram. And जब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव जाता था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो कई सारे लोग मुझसे ज्वाइंट होते थे. एंड मुझसे जब वो बातें करते थे, तब मुझे जो है पता चला कि मैं लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता हूँ. बिकॉज फर्स्टली आई वाज फेल्ड. जब मैं पहली बार फेसबुक पे लाइव गया था, तो लोग तो ज्यादा आए थे, बट मैं ततर कर रहा था. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए,
कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे. लोग कह रहे थे ब्रदर थोड़ा सा मोटिवेट करो, but at that time I don't know that how, from where I should start motivating them. So that was the situation which I have, and that thing motivated me, and that thing really helped me to learn from the failure. And now you can see that in 2021 I did a charity live event on Instagram of charity Mahalive. 2000 plus people joined over there, and totally 2 hours I speak with a lot of people, with a lot of entrepreneurs, total 2 hours. And that is the part of my journey, that is a part of my practice. So that's why one thing I should say, that never ever give up, and never give excuses to practice. Okay, many people give excuses to take action, but never give see, if you are perfect in a thing, in a any skill, in public speaking, in any other skill, in singing, in dancing, if you are perfect, but never stop trying those things, never stop practicing those things. Because when you stop practicing those things, see, मैंने जो है अभी तक practicing जो है leave नहीं की है, because see, before 1 month I was taking some webinars online, and after 1 month, okay, at I can say in September I was taking the webinars, and October November I didn't did anything. मैंने कोई webinars नहीं लिया, मेरी कोई practice नहीं हो पाई, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाया, बट मैं सिर्फ वीडियोस बना रहा था, मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया पूरे 2 महीने. सो मेरी प्रैक्टिस टूट गई. एंड देन माय मॉम सेड टू मी दैट आपकी प्रैक्टिस टूट रही है एंड आपको वेबिनार लेने हैं. सो दैट आई एम आल्सो टेकिंग 6 days of free master class right now. So मैं अभी भी ले रहा हूँ, because I just want to improve my skill right now also. So this is how I started my journey. That's inspiring. That's inspiring, Anas. And you started at the age of 7. It's amazing because हम figure out भी नहीं कर पाते हैं. So that was one of the inspiring. And I love your parents who understood what is your strength and they had pushed you to be that. And आपका strength को build करने में they had been pillars. They were standing along with you as a pillars. That was Absolutely. amazing. Hats off to your parents who had brought you here, and we are glad that you are here today between us. And one of the most important thing that you had mentioned, that definitely our audience who are listening right now should also, everyone should understand that we should never underestimate the power of practice, because once practice goes off, everything again you are going to get started as from zero. It Yes. becomes very difficult. So that is one of the amazing point that you had highlighted for. And Anas, I would also love to know that did see in the journey what happens, that you started very early and there are people in the market, they make fun of you most of the time. So did this happen with you that you were a kid and बच्चों ने ये बोला होगा कि यार मैं बच्चा से कैसे सीखूं करके, तो ये आपको कभी लोगों ने फील कराया क्या ऐसे कि बच्चा मुझे क्या सिखाएगा? Now that you came up with the 6 days of master class also, so is there something that you faced in your journey? Yes, I faced that kind of things, but not physically, because no one said to me physically on my face that Anas, what are you doing? Don't do these kind of things. But online, many people commented on my videos that firstly, when I uploaded my third or fourth video, I think on YouTube, then someone has commented 5 to 6 lines, and he commented literally like this. I know that words, that sentence, I know like that. He said कि इतनी भी जल्दी क्या है बेटा यूट्यूब पर, पहले पढ़ाई लिखाई कर ले, ये सारी चीजें बाद में कर लेना. ओके, he didn't underestimated me, but this kind of words he said to me on the comments. And you know what, at the starting I was literally giving all of my efforts, because at that time there were no schools, but I was shooting my videos at night at 2 p.m, at 2 p.m, at 3 p.m, I can say, sorry, at am, right? So इतनी रात को जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, and it was really hard for me to edit my videos, it was really hard to make thumbnail, it was really hard to make SEO of my videos, all those things which was very very critical. But after doing all those things, the man commented on my video that you can't do, just go to the school and do these things after all. So then I just made my mind that I will quit, I will not make the videos. You can go on my YouTube channel and you can see that I said मुझे अभी करना ही नहीं है, वीडियोस बनाना नहीं है. गुस्से में मैंने जो कोट पहना हुआ था वो निकाल के मैंने फेंक दिया था. इतना मतलब मुझे
इरिटेट हो रहा था उस कमेंट से। देन उसी के बाद उसी कमेंट के बाद सिर्फ ठीक 5 मिनट के बाद एक पॉजिटिव सा कमेंट आया जो कि बड़ा सा था। उस पॉजिटिव कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है अपनी पावर को खुद अंडर एस्टिमेट अगर कर रहा हूँ, अपने स्किल को, अगर अपने जो मेरा डेडिकेशन अगर मैं उसे खुद ही दबा रहा हूँ, तो ऐसे तो बहुत लोग आएंगे जर्नी में, लेकिन अगर मैं खुद से ही हार गया तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ सकता। एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो मोटिवेटेड मी अलॉट. So after that, I never looked back, and many people commented me on my reels, on my YouTube videos, that what are you doing? Some people give bad word me on my comments, but in front of the positive comments, the negative comments are 0.1%. So that's why I didn't give all the attention to the positive people. I reply all of my comments because I know that the people who are literally know that how to appreciate someone, how to appreciate someone's work, then we should only get to the attention to them. That's true. That's true. Anas, I genuinely got those goosebumps once you told the words कि वो जो वर्ड आपने बोला ना, मेरे को एकदम से goosebumps आ गए, and the way you had threw that blazer कि नहीं करना, ये आई थिंक ये हम सभी के जर्नी में एक बार ना एक बार आता है, क्रिटिसिज्म से हम क्विट कर देते हैं, बट यू आर अ रियल एग्जांपल दैट इवन द क्रिटिसिज्म्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, you focused on what positivity that is coming towards me again, and आई थिंक मान लो कि आप उस दिन गिव अप कर देते तो शायद आप जहां पे हो, इतने लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो, शायद नहीं कर पाते। सो दैट वन डिसीजन वाज नीडेड। People will criticize that it's about not quitting and continuing your journey, believing in yourself. That's inspiring again. So जब आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया हुआ था तो व्हाट वाज द जर्नी, बिकॉज अभी 13 इयर्स में आप 7 में स्टार्ट किए थे एंड अभी 2020 में, मतलब आप 10 साल के थे तब आपने ऑनलाइन आए थे, Yes, राइट? right. सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन मार्केट एंड सब, बिकॉज नाउ अभी हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, सो उनका होता है कि एडिटिंग मुझे करना है, टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, आपके एग्जाम्स होते हैं, टाइम नहीं मिलते, एडिटिंग आप कर रहे हो, एसईओ आप कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, वीडियो 2 बजे बना रहे हो। सो ऐसा क्या डिफिकल्टी आया ऑनलाइन दैट दैट कैन डेफिनेटली यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस सो दैट इट कैन आल्सो हेल्प पीपल हु आर लिसनिंग। When I started my journey at the age of 10 and 10 to 11, I was on TikTok firstly, because I don't know that what is YouTube and how to upload the video. I even don't know that we can upload the video on YouTube. I even don't know that thing, but I know only one thing, that is TikTok. And at TikTok there were some effects which we can add at the time of uploading. जब हम अपलोड करते हैं वीडियो, तब जो इफेक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं बस उतना ही ऐड करना था, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक अपने मन से लगानी थी, बाकी उतनी एडिटिंग मुझे ज्यादा आती नहीं थी। बट व्हेन एट द एज ऑफ 12 आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड देन I used to saw so many kind of videos and of video editing and of photo editing, of thumbnail editing, but they people just their people are just using Adobe Photoshop and the tools which are very expensive. They were using that of things, and they were also very critical, I can say. But when I downloaded my personal and my lovable app, that is KindMaster, which I can say it is used to for me, because I did a lot of practice on that. Every day, every month, I got to know something new in that app, which is very old, which is very, I can say, which is very normal. But after 1 month, I got to know that this thing also exists in KindMaster. Oh my god. Okay, now let's add this, what is happen, what happens. So after doing a lot of experiments on my videos, you know what, I did experiment on my videos, because I can say that hundreds of videos are like that, which I shooted, I edited, but I didn't upload it. They are like to be upload, means वो ऐसे वीडियोस जो मैं अपलोड कर सकता हूँ, बट फिर भी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने उतने सारे वीडियोस बनाए हैं, बट मैंने उन्हें अपलोड नहीं किया है, बिकॉज जस्ट आई वांट टू नो व्हाट हैपेंस। एंड द डिफिकल्टी जो मुझे आई थी फर्स्टली, दैट वाज के वीडियो मेकिंग में एंड लाइव परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होता ही है। सो दैट थिंग आई गॉट टू लर्न, बिकॉज जब मैं पहली बार फेसबुक के ऊपर लाइव गया था, तब किसी भाई ने बोला था कि भाई आप जो है कहाँ रहते हैं, मैंने कहा पुणे महाराष्ट्र, बस वहीं पर एंड कर दिया। मैं कम्युनिकेशन को कभी आगे बढ़ा नहीं पाया, एंड वो थिंग मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था मैम। एंड कई बार मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, अगर आपको बताओ मेरे डिजिटल लाइफ में, ही है कि रात को जब मैं वीडियो शूट करता हूँ, दैट इज नॉर्मल,
ओके, रात को मैं अगर 9-10 बजे अगर स्टार्ट करता हूँ वीडियो शूटिंग तो जल्दी भी हो जाती है, या फिर 1-2 बजे भी बच जाती है, क्योंकि वॉइस नहीं होता ना आसपास का, शांत हो जाए माहौल, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जो मेन थिंग मुझे फेस करनी पड़ी दैट इज, एक बार मैंने एक स्टोरी थी, एक इंस्पायरिंग गर्ल की स्टोरी थी जिसके पैर नहीं थे बट फिर भी वो एक डॉक्टर बनी बहुत सक्सेसफुल। उसकी मैं सक्सेसफुल स्टोरी बनाता, 2 पार्ट मैंने उसके बनाए थे, ओके, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। और वो भी ग्रीन स्क्रीन मैंने किसी से दीवार के ऊपर नहीं करके, बल्कि मैं, कोई स्टैंड वगैरह नहीं है मेरे पास ग्रीन स्क्रीन के लिए, मैं ग्रीन स्क्रीन के पर्दे के ऊपर जो कील होता है उसे ठोक कर दीवार के ऊपर जो है मैं लगाकर अच्छे से सेट करके वीडियो शूट करता हूँ अपनी मम्मी के साथ। तो मैंने ग्रीन स्क्रीन सारा फिट किया अपने पूरे रूम में, रूम के बीच बिल्कुल सेंटर में मैंने फिट किया, दीवार के ऊपर नहीं लटकाया, दूसरे 2 हुक से जो है मैंने उसे इस तरह हैंग कर दिया, बीच में टंगा दिया। और मैंने वीडियो में बता, एक वीडियो मेरी बनी थी 10 मिनट की, यानी कि कट वगैरह वो सब मिला के अगर मैं बनाऊं तो एक पार्ट हुआ था 10 मिनट का, वैसे 2 वीडियो मैंने बना, एक 20 मिनट्स की वीडियो। एंड आफ्टर दैट मुझे पता चला वीडियो का स्टार्ट बटन ही ऑन नहीं है। Oh. फिर ये जो चीज मेरे साथ हुई, अच्छा, अब इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि यार अगर ये इतना हार्ड है, वीडियो मेकिंग इतनी हार्ड चीज है भाई, तो मैं क्यों करूं, मुझे तो भाई इसमें कुछ मिल रहा ही नहीं, ये सोच के कुछ लोग गिव अप करते हैं। बट आई वॉज नॉट इन दैट काइंड ऑफ पीपल, आई वॉज दैट मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, दैट इज गुड। सी, जब मैंने दोनों वीडियो जब 10-10 मिनट में एंड कर दिए, तो नेक्स्ट जब उसी वीडियो को जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो एक फ्लो में तो मैं बोल सकूंगा ना, मेरी प्रैक्टिस तो हो गई ना, अब मैं बाद में बीच में पॉज नहीं लग सकता, कुछ वर्ड्स थे जो कि मैं पॉज लेकर बोल रहा था, अब मैं उन्हें साथ में भी बोल सकता हूँ, दैट वाज माय प्रैक्टिस एंड दैट थिंग आई गॉट। एंड ऐसे बहुत सारे बार हुआ है कि कभी हमारा माइक काम नहीं कर रहा, मतलब मैंने एक साथ 6-7 रील बनाए, मैं हर बार करता हूँ सैटरडे संडे जो है मैं वीडियो शूट करता हूँ, 6-7 मैंने रील बनाए एक साथ। बट एट द एंड ऑफ मैंने देखा, मेरा मोबाइल ओपन करके वीडियो ऑन किया एडिटिंग के लिए, तो देखा कि माइक की जो पिन थी वो लगी हुई थी लेकिन सही से लगी हुई नहीं थी, तो माइक का जो साउंड था शर कर, वो वॉइस उसके अंदर ऐड हो गई थी, मेरी वॉइस तो आ रही नहीं थी। तो वो चीज भी मेरे साथ बहुत बार हुई है। एंड जस्ट ये नहीं चीज को, बट the player who is that, who take these all things in a positive way and who learns from this situation is the real player. That was inspiring, Anas. That was really inspiring. I think आपके जगह पे काफी लोग give up कर देते हैं. But it's about taking the things positively. That's what you mentioned. So that's amazing. That's really inspiring. I also would love to know, Anas, that now that you go to school, so आपके age के बच्चे लोग, they're not doing much as much you are doing. So how is the impact in your school with your friends, with your classmates? Firstly, I would like to say that they are not too much excited for what I am doing, because the thing which we all are doing, the all our entrepreneurs are doing, they don't know that what we are doing, the meaning of our skill, the meaning of the words we are saying, all those things they don't know. And I also don't like, because their mindset is very different and my mindset is very different. Some of my friends are those who focus on their studies and who are like very sincere, so they know that what I am doing little bit. But there are some also friends who don't care about my thing, who don't matter in that life, in their life my skill, my work doesn't matter, and I also don't give to them so much of attention, so much of importance, because if they don't want to know other things, so I would like to know, because they use social media for just reels and for just wasting their time. But the thing which I am doing, they don't know the एनीथिंग ऑफ देम, उसमें 0% भी उन्हें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, लोगों को किस ट्रैक पे जाना चाहिए और किस ट्रैक पे वो जा रहे हैं, इन चीजों के बारे में उन्हें पता नहीं है। सो मतलब ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव तो नहीं है, बाकी नॉर्मल। Okay, okay, that's amazing. Also, I would love to ask you, is there any one message that you can give to listeners over here? Because here हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 30 भी है, 20s में है, 18 में है, 40s के भी है यहाँ पे, तो they think that we have got started really late, है ना? So what do you think that what is one that message that you want to give to everyone who is listening or who will listen in future, that what they want to get started but they think that this is not the right time for me, I'll do it later. So what is your message for them? Firstly, I would like to give 2 examples of 2 persons. That is, firstly, the owner of KFC. He was above 60 and he was trying to sell his chickens since when he was young, I think. And at the age of 60 or 60 above, I don't know the real age, but he was at the age, in that age, the
senior citizens just want to do rest and they want to chill, they want to enjoy their senior citizen life. But that man didn't give up, and he tried to sell all his chickens to door all the people. And also, okay, let him go. Boman Irani, the Bollywood actor, he started his journey from 50. When he was just age of 50, he started his journey. Okay, now this is the point of senior citizens. Now I can say a boy who is just 6 years old, okay, at the, yes, in 2021, the previous year, the boy who is just 6 years old, but with his passion and with his all skills, he made, I can say, billion of rupees in his life. And Ryan Kazi, his name is, because he is just little, but on YouTube he is in Forbes magazine. Also, he is uh, he's also on Forbes magazine. But when he was started his journey, he's just unboxing his toys or just playing over there. But when he can do that kind of things, and that Bowman Irani and that kind of people can do this thing, then why not you? See, the people who just give excuses by starting, it just means that they don't want to do that thing. अगर इंसान को सच में उस काम करने की चाहते तो वो excuses नहीं राह ढूंढता है, लेकिन अगर उसे काम करना नहीं है तो उसके सामने राह होगी भी तो भी वो नहीं चलेगा। या तो वो अपनी चप्पल जानबूझ के तोड़ देगा, या तो फिर उस रास्ते में खड्डा कर देगा, कुछ तो भी कर देगा, पर उसे जाना नहीं है उस रास्ते में, because he don't want to go on that part, on that way. So the one thing I would like to say all of you, that follow your passion and follow your skill which you have. And see, many people try a lot of things in their beginner journey. जब भी वो beginner होते हैं, जब भी वो try करते हैं किसी भी नई चीज को, then they tries one thing at only one time. किसी एक चीज को बस एक ही चीज के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर सपोज आपको लगता है कि यार इस चीज में मेरा स्किल है, मैं इसके अंदर बड़ा आगे ग्रो कर सकता हूं, तो आपको बस उस काम को लाख बार ट्राई करना है। लाइक KFC इज ओनर, आपको एक काम को जो है 4 बार नहीं, 8 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार आपको अगर ट्राई करते हो, फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, कई सारे लोग सोचते हैं कि यार मैंने 100 काम ट्राई कर लिए, ओके, मैंने जॉब कर ली, मैंने बिजनेस कर लिया, मैंने ऑनलाइन देख लिया, मैंने ऑफलाइन सारी चीजें देख ली, बट मुझे किधर भी कोई भी जगह में मैंने कहीं पर ग्रोथ नहीं देखी, कहीं पर मैंने एक फ्यूचर नहीं देखा, कहीं पर मैंने वे नहीं देखा। ऐसे लोग जब बोलते हैं ना और कहते हैं कि एंडिंग में मैंने बहुत हार्ड वर्क कर लिया वो तो ऐसा हो गया ना फ्रेंड्स कि हमने 100 पिक्चरों की सिर्फ ट्रेलर देखे, मूवी तो देखी ही नहीं। किसी एक पिक्चर तो देखो, आप किसी एक फील्ड में तो उतर के देखो, सिर्फ आप ऊपर ऊपर से अगर नॉलेज लोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने किया था, मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब में देखा था कि कई सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं बहुत सारी अपनी स्किल बता के, तो मैं भी करूंगा बहुत सारी अर्निंग। बट जैसा आप सोचते हो, जैसा प्लान करते हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड जो आपकी स्किल है ना, देखो मेरे मम्मी ने मुझे आज ही कहा था कि जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है ना, ये सिर्फ एक नॉर्मल कोई एक स्किल नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। आई कैन से फर्स्ट इज एंकर, अगर आप कोई स्टेज पे एंकरिंग कर रहे हैं तो वो भी एक पब्लिक स्पीकिंग करते हैं आप। एंड सेकंड द टाइप ऑफ थिंग कि अगर आप स्टेज के ऊपर सपोज कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे कोई बिजनेसमैन है, अगर वो स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो भी एक पब्लिक स्पीकर है। एक टीचर जो वो अपने कोच जो होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो भी अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपने मेंटीज के सामने पब्लिक स्पीकर होते हैं। एक पॉलिटिशियन जब वो अपने जनता के सामने जब वोट्स मांगने के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, ही इज ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। एंड एक मोटिवेशनल स्पीकर भी पब्लिक स्पीकर से अलग होता है। बट जो पब्लिक स्पीकर होता है ना, वो इन सभी चीजों का एक मिक्सचर होता है, इन सभी कैटेगरीज का एक मिक्सचर होता है पब्लिक स्पीकर। उसे लोगों को एंटरटेन करना है, उसे लोगों को अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, उसे लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना है, अट्रैक्ट करना है, उसे लोगों को एंटरटेन करके लोगों की नींद भगा देनी है। यानी कि लोग, बहुत सारे लोग सो जाते हैं अगर किसी किसी इवेंट में, बट उनकी नींद भगा के उन्हें जोश दिलाना है, उनका माइंडसेट चेंज करने की ताकत रखता है एक पब्लिक स्पीकर। सो नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ इफ यू गॉट फेलियर इन योर थिंग, बिकॉज देखो पब्लिक स्पीकिंग ना एक ऐसी स्किल है कि जिसमें अगर एक बार आप लोगों ने अगर फेल हो गए, तो आप लोगों के माइंड में आता है कि यार मेरी रेपुटेशन, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो ना, तो आप अपनी रेपुटेशन अपनी नजर में गिरा रहे हो। यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ इन योर ओन विजिबिलिटी, आई कैन से। सो दैट्स व्हाई नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, because when God closes the one door and then after he opens the 100 doors for you, so just wait for your turn.
That was so deep and that was amazing. Thanks a lot, Anas, for pushing all my listeners right now. I'm sure that this movement is going to change their life in upcoming days. They are going to take action. Thanks a lot for inspiring for all of us, right? And thank you so much for coming between us. Thank you so much for Most inspiring welcome. all of us, Anas. I would love to ask you that how did you feel being here with us? Firstly, this is my first experience to be a judge in an event, and that is very, very, very honorable moment for me in my in my journey. So thank you very much, Sujata ma'am, and all the pro speakers up for your all the humble love and all your respect. Thank you very much for that. Thanks a lot, Hats off Anas. to you, all of you. Thanks a lot. Now we are going to open some doors. If anyone has any questions, quickly, we have very short time. I'm sure that we have almost completed 2 hours. And also before we proceed further, before we take up your questions, one or two questions we'll be taking up. Okay. And if you are inspired by Anas today and by the event today, so just take a screenshot of this, just post it on your story and tell how much inspiring he was. Tag me, tag public speaking tips page, tag Anas. Okay, Anas, you can put your Instagram page ID in the chat section as well, so that you can put your experience of today's, that how was it, how was the entire event. All right. Thank you so much. And any questions for Anas here? Yeah, Prathamesh has a question, I believe. And Frank also has a question. So we'll take two questions and we'll continue. I need to announce the result as well. So it's already 2 hours now. Okay, so let's go with Prathamesh. So yes, thank you, Sujata. So thank you, Anas, for such an inspiring words. So I heard that you used to shoot your videos at the night time, which I also do. So I just want to ask you, after putting a lot of efforts on shooting video, on editing it, when we upload the video on social media, and when we don't get that kind of engagement which we expect, then how you react to that? When I don't get the views, right? Yeah, views or engagement. Uh, See, firstly, we have to focus that from where we are not getting views means the people are not liking our content, or we are not putting that much of efforts in our content, because these two things very matters. Because when you make an exciting and energetic content and valuable content which can really influence the people and can attract to yourself, then the very people will the most of the people will watch your video, and not only watch, they will share your video also. So firstly, I would like to say that the views when I was not getting, uh, the major reason of not getting the views, that is inconsistency. Whenever we जब भी हम लोगों की नजरों के सामने से हटते हैं, बिकॉज सी अगर डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं, डेली लोगों के सामने नोटिफिकेशन जाती है दैट प्रथमेश हैज अपलोडेड एन वीडियो, गो एंड वॉच नाउ। जब ये चीज आपके सामने आती है ना, हर लोगों के सामने, तो लोग अगर एक स्टार्टिंग के भी कुछ पल देख रहे थे आपकी वीडियो, तो आपको व्यू मिल जाता है, राइट? एक दो वीडियो अगर आप Yes. एक दो मिनट अगर देख ले तो आपको व्यू मिल जाता है। So that's why we have to put a lot of consistency, because previous last year I can say that I was not consistent on my YouTube channel. I'm to be honest that I was not consistent. But from now I'm trying to be consistent. I'm trying to upload a lot of videos. And if you are not consistent, many of people try to be consistent but they are not, because they try to do something big. Every time they think to do big, but they don't know that how to take a small step. So that's why I would like to say that make a YouTube video, if you are making a long video, then it will be less than 5 minutes. And if you are making a short video, it will be less than 30 seconds. So it will attract the audience to watch that video. Because for audience, it doesn't matter that video is of 10 minutes or is it of 3 minutes. But if the 10, see, अब आपको बताता हूँ कपिल शर्मा शो, राइट? आपको पता होगा। सो Yes. वो होता है 10 मिनट का या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का एपिसोड होता है, बट उसमें जब कॉमेडी होती है लोगों को वो अच्छा लगता है तो लोग पूरा देखते हैं, राइट? लेकिन अगर उस एक 30 सेकंड की भी अगर कोई वीडियो है, जैसे कि कच्चा बादाम जो गाना निकला था, वो सिर्फ एक 30 सेकंड का उन्होंने जो है छोटा सा बोला था, लेकिन वो भी वायरल था क्योंकि वो लोगों को पसंद आ रहा था। अब हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो कम्युनिटी है वो डिफरेंट है, तो उन्हें जो हम देंगे, उन्हें जो हम अगर
डेली टू डेली देंगे। बाकी मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता था, बट बाद में मुझे पता चला कि मेरी गलती की वजह से ही शायद लोग जो है मेरी वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं। दैट वाज अनकंसिस्टेंसी। Okay. Thank you so much. That was really helpful. Thank you. मोस्ट वेलकम। Yeah, Frank, you had a question. Thanks a lot, Anas. Yes, yes. All right. Yeah. I have one question. Yes, Anas, first of all, thank you so much for being here with us. And this is actually quite an inspiring story, just as Sujatha ma'am was saying, right? Yeah. So I wanted to ask you like a question which I was asked by someone, right? And I thought you were the best person to answer it, right? So somebody asked me to say, Frank, you've seen those people that maybe that make YouTube videos, they'll be speaking continuously when they're explaining their things. And I could see that, okay, Anna say you're actually doing the same thing. So I was like, oh, this is the best person to ask right now, right? So like the secret like to speaking continuously when you're explaining something. So I think yeah, you're the best person to ask, and that is my question, right? When you're explaining something, how do you continuously speak and just explain everything in such a great manner like you're doing right now? See, Frank, I can say that if you want to ask that how I speak in a guts, right? In a speak how I speak in a guts, right? So the main thing after speaking in a guts, right? That is never eat too much before your presentation. That is the thing. Before 1 hour, before 2 hour, you can eat. Yes, before 2 hour you should eat. But when it comes, see, my meeting was at 2 p.m. right today, but I ate some food at 10 to 11 p.m. because 10 to 11 a.m. because I don't want to get lazy, because whenever you eat too much you get lazy, and when your inner body get down and it feels to do rest, and whenever your mind thinks that you are eating too much, then your mind releases the chemicals that helps you to think that you have to do rest now. So that's why never eat too much, I can say. And it all of the things of practice, because most of the people do one thing, that they do practice but they do not practice of their field. They do practice of something another field, and they talk of something another topics. They don't talk the topics which they should talk. But whenever you want to communicate with someone, then just try to communicate about public speaking. The topic should be about public speaking, so that whenever you will give motivation or you will give the information of public speaking to someone, then you will not, I can say, you will not fumble, and you will not go to think. You will, okay. So whenever you will do communicate with someone, so whenever you practice, whenever you make videos of public speaking, because the vocabularies are there in our field. In public speaking there are some vocabularies which we have to improve, because whenever we are communicating someone and then we do not get the word in our mind, and we just say that wait, I want to yes, that thing, but we do not get that point, we do not get that word in our mind. So that thing really impacts on our personality, I can say. So that's why improve your communication with your niche. Whenever you talk more and more about your niche, talk more and more about your skill, about your field, so it will be really help to speak in a guts, and don't eat too much before the presentation. That's amazing. Wow, that's extra deep actually. Thank you so much for the advice. That was wow, mind blowing. I have no words actually. Thank you so much. Most welcome. Awesome. Awesome.